everyone, welcome back to my channel. This is Pal Rathi. Hope you all are doing well. On this channel you get health and skincare related videos जिन्हें देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा and press the bell icon to get the notification of my next videos. So as you see the thumbnail of this video, today we're going to discuss about thyroid disorder, which is very common mostly in ladies. So basically it's a small butterfly shaped gland जो आपके काफी सारे body functions को regulate करने में help करती है by constantly releasing thyroid hormones into the blood. Most interesting thing about these thyroid hormone is that ये हमारे health के सभी aspects पर impact करते हैं, जैसे कि growth, consumption of fat, heart rate, body temperature and so on. And the main job of this thyroid gland is to control the speed of your metabolism. Metabolism वो process होता है जिस process से आपकी body food को energy में convert करती है because all the cells in your body needs energy to function. सेकेंड थिंग इज दैट जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, सपोज बाहर सर्दी है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो द थायराइड ग्लैंड सिंपली प्रोड्यूस मोर हार्मोन ताकि आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सके. बट अनफॉर्चुनेटली दीज थायराइड ग्लैंड समटाइम्स प्रोड्यूस हार्मोन्स एबनॉर्मली जिन्हें हम थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं. मेनली ये टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म. Both are glandular malfunction. Let us first discuss about hypothyroidism. So as we look at this word, hypo means come. So in hypothyroidism, the thyroid gland is underactive. Means it does not able to produce enough thyroid hormones. और ये condition ज़्यादातर women's को affect करती है rather than men. हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स मेनली हार्मोनल डेफिशिएंसी के लेवल पर डिपेंड करते हैं एंड दीज सिम्टम्स डेवलप्ड ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स. सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आर फटीग, जल्दी थक जाना, वेट गेन, इर्रेगुलर पीरियड्स, पफिनेस ऑन फेस, swelling at the back of the neck. Hypothyroidism caused due to genetic factor, over response to hypothyroidism medication during pregnancy, iodine deficiency, or if you have any autoimmune disorder such as type 1 diabetes. अभी हमने देखा हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, उसके सिम्टम्स और वो किस वजह से होता है. Now let's discuss about hyperthyroidism, its symptoms and its causes. So as the word suggests, hyper means zyada. So this condition is totally opposite to hypothyroidism. In hyperthyroidism, the thyroid gland is overactive and start producing more thyroid hormones, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट फास्टर हो जाता है. मीन्स आपकी बॉडी फूड को जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से यू फील रेस्टलेसनेस. The most common symptoms of hyperthyroidism includes increase in appetite, आपको जल्दी जल्दी भूख लगेगी, एकदम से weight loss हो जाना, irregular heartbeat, excessive urination, sweating, nervousness and anxiety. Now let's look at its causes. So the hyperthyroidism condition caused due to the Graves' disease, which is also an autoimmune disorder. Second, it can happen if you have medical history related to any chronic illness such as type 1 diabetes. Now let's understand the yogic management of thyroid disorder. कैसे हम इन thyroid malfunction को ठीक कर सकते हैं naturally with the help of yogic techniques. Because yoga techniques helps to cope up with the symptoms much better along with the medication that's suggested by your doctor. Yoga significantly focus on 3 pillars of lifestyle. First is food, which we called ahar. Second is your day-to-day activities. Third is your thought process, which we called vichar. If we talk about ahar, your diet and nutrition, so sattvic food is important because it is low in calorie, high in fiber, and it is fresh, natural, nutritious food. Second is you should intake water in enough quantity, about 8 to 10 glasses of water per day. Lemon juice twice a day. Plus you should follow your doctor advice also. If you have hypothyroidism, your food should be iodine rich. Take milk and milk products, potatoes and strawberries, onion, garlic, sunflower and sesame seeds, जो कि एक natural source है selenin का, that help producing thyroid hormones. Plus you can take nuts, almonds, walnuts, cashew and pumpkin seeds. अब वो फूड जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में नहीं खाने चाहिए वो है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रोकली, मिलेट्स, मोटे अनाज, सोया प्रोडक्ट्स, टी, कॉफी, fried and processed food, refined sugar and alcohol. Now in hyperthyroidism condition, what food you should eat? Protein rich food, take vitamin B,
Iron and antioxidant rich diet, vegetables such as cabbage, broccoli, cauliflower, spinach and almonds and walnuts आपको moderate quantity में लेने हैं. Millet, soya और ginger खा सकते हैं. Now the food you should not eat in hyperthyroidism condition. Iodine rich food, milk and milk products, potatoes, refined food, nuts, coffee and alcohol and tobacco. Come to the next pillar of lifestyle, that is achar. A day-to-day activities that you should do to maintain good health, such as simple exercises, are beneficial. You should always practice backward bending asanas such as Bhujanga asana, Ushtra asana, Marjari asana. Because जब आप backward bending आसन करते हो तो you can feel the stretching effect on your thyroid gland. सिंह आसन करने से आपके थ्रॉट एरिया को स्ट्रेंथ मिलती है. प्लस यू कैन डू इन्वर्जन आसन जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करके रखते हैं, जैसे कि सर्वांग आसन, विपरीत करनी आसन, हल आसन. हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स को सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा. यू कैन डू एक्टिविटीज सच एज ब्रेक्स वॉकिंग एंड प्लेइंग बैडमिंटन एक्सेट्रा. आसन के बाद प्राणायाम भी बहुत जरूरी है. सो जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है उन्हें भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम कंपलसरी है. सूर्य भेदी जैसे प्राणायाम करने चाहिए. इन प्राणायामों की प्रैक्टिस से आप पूरा दिन एनर्जाइज फील करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन वाले पेशेंट को क्या करना चाहिए. आपको एक्सरसाइज और आसन रेगुलर बेसिस पे करने हैं, बट रिमेंबर जब आप आसन या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें स्लो स्पीड पे करें. Because of restlessness in hyperthyroidism patient, you should always keep yourself calm and meditation is compulsory. हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स को प्राणायाम में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम जिसे बोलते हैं, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी प्राणायाम, चंद्र भेदन, ओम चैंटिंग जैसे प्राणायाम करने चाहिए. वुड रियली हेल्पफुल इन hyperthyroidism condition. For thyroid patients, practicing conscious relaxation techniques such as Shavasana, Makarasana, Dradhasana twice a day is very good. Finally, come to the last pillar, that is vichar, your thought process. The best way is to accept your condition and focus only on managing it. Spend time with your families, stay in a positive environment, do whatever you like to do, because these yogic techniques will surely help to managing your thyroid if you practice these methods regularly. So it's time to finish this video, guys. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए do like, share and comment and subscribe my channel for amazing healthcare related videos. Stay healthy, stay happy. Thank you.